Hello kids, welcome to the class. Now in this video we are going to learn, we are going to study, we are going to understand a poem, and the name of the poem is Someone. The name you can see it's written here, and the name of the poem is Someone, and the poet of this poem is Walter de la Mare. The poet of this poem is Walter de la Mare. In this poem, before starting the explanation, what is the poem about? This poem is about someone who is unknown. Here the poet is telling us about an unknown thing or person. He himself doesn't know what is that, whether a person or a thing. So this poem is about it's a mystery. It's about a mysterious thing. It's about a mysterious happening that the poet, he himself doesn't know that what is that, whether a thing or a person. कि इस poem में कौन है, इसलिए इसका नाम कैसा है? Someone. कोई है, but कौन है? Don't know. है ना? So in this poem we'll come to know that who is that, whether a person or a thing. Now let us start the poem. First I'll read and then I'll explain. Alright? Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall. Only from the forest the screech owl's call. Only the cricket whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all. Someone came knocking at my wee small door. Here the poet is assuming himself as the character of the poem, as a boy in the poem, and here he is assuming the scene of the forest, that he has a house in the forest. जंगल में उसका घर है एक छोटा सा. Someone came knocking. Knocking means खटखट करना, आवाज, the sound of tapping on the door, टक 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 टक, है ना? At my wee small door. V, W-E-E. V here means very tiny, small, बहुत छोटा. कोई आया, किसी ने दरवाज़ा खटकाया. मेरा छोटा सा दरवाज़ा था घर का, एक छोटा सा दरवाज़ा है, उसको टैप किया, नॉक किया. Someone came knocking, I'm sure. कोई है जिसने नॉक किया है. I'm sure, मैंने आवाज़ सुनी है. I'm sure, I'm confirmed. It's confirmed that there is someone who is knocking the door. I listened, I opened. मैंने वो आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला. I looked to left and right. दरवाज़ा खोला, then I see the left, then I see the right. Left को देखा, right को देखा. But not there was a stirring. लेकिन when I saw left and right, there was no stirring. Not. N-O-U-G-H-T, not. Not means nothing. Stirring means moving. When I saw, there was nothing moving. फिर मैंने बाहर जब देखा इधर उधर तो कोई भी चीज़ नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई आना जाना नहीं था. There was no one. In the still dark night, only the busy beetle. In the still dark night, रात थी, still. Still here means without any movement, means रात. जब रात को सब सो जाते हैं घरों में अपने, हम बाहर कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई कार्स, बाइक्स, लोगों का आना जाना कुछ नहीं होता है. That type of scene is known as, that type of night is known as still. Still night means सब कुछ रुक जाती है, हमारी लाइफ एक जगह पे स्टॉप हो जाती है. Everything gets stopped. There is no movement of any type of thing on the road, isn't it? So सिर्फ क्या था उस रात में, सिर्फ किसकी आवाज़ थी, किसकी मूवमेंट थी? Only the busy beetle. Beetle क्या होते हैं? कीड़े होते हैं जिनकी रात को आवाज़ आती है, ठीक है? Beetle, उसकी आवाज़ थी. टैपिंग इन द वॉल, आवाज़ आ रही थी दीवार में टैप करने की, टप टप टक टक
की आवाज़ आ रही थी, लाइक somebody was tapping. Only from the forest the screech owl's call. सिर्फ जंगल में से किसकी आवाज़ आ रही थी? Screech owl. Screech owl means a kind of owl. It is a breed of owl. Owl की एक कैटेगरी है, owl की एक breed है, ठीक है, it's a kind of owl. और जंगल में से किसकी आवाज़ आ रही थी? Screech owl. उल्लू की बोलने की आवाज़ आ रही थी. Only the cricket whistling. Only the cricket whistling. Here the cricket is not the game which we play. Isn't it? Bat ball जो खेलते हैं. It's not that game. Here the cricket is also a type of insect. आपने अपने साइंस में EVS पढ़ा होगा. It's a type of a insect. उसकी आवाज़ आ रही थी whistling की. While the dew drops fall. Dew drops means ओस की बूंदें. और पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी. जो ड्रॉप्स गिर रही थी उनकी टपकने की टिप 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 इतना साइलेंट था, इतनी शांति थी कि इन चीज़ों की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही थी. सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग एट ऑल एट ऑल एट ऑल. इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, इट वॉज वेरी मिस्टीरियस दैट देर इज़ नो वन. ऐसा लगा दैट देर इज़ सम वन, बट एक्चुअली देर वॉज नो वन. सो देन आई केम टू नो दैट देर वॉज नो वन एट द door. Only the sounds which I heard of the beetle, of the owl, of the cricket, only dewdrops, only these were the sounds which were there in the still dark night. It was just a confusion, it was just an illusion कि कोई है, but there was no one. Okay? So this is the poem in which the poet has assumed himself as a boy, and the experience which he is sharing here of the night which he felt that there was somebody at the door but actually there was no one. So होता है ना, कभी कभी हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, sometimes it happens, हम ड्रीम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो था, और जब हम उठते हैं एकदम से घबरा के उठते हैं तो देयर इज़ नथिंग, तो कुछ नहीं होता है. Isn't it? Sometimes it happens with us कि हम सपना देखते हैं नाइटमेयर में कि हमारे साथ ऐसे हुआ, कोई आया, किसी ने हमें आवाज़ दी, किसी ने हमें हिलाया कि गेट अप, है ना. बट व्हेन वी गेट अप ऑल ऑफ अ सडन देन व्हाट हैपेंस, वी सी दैट देयर इज़ नो वन, इट वाज जस्ट अ ड्रीम. कहते हैं अरे सपना देखा मैंने कोई. सो हेयर ऑल्सो द पोएट हैज़ फेल्ट द सेम थिंग and he has expressed in the form of a poem. Okay students, okay.